Hello and welcome to Parent Solution. Today we have here with us Dr. Dhaval Kumar Sood. Welcome, Dr. Dhaval. Good evening and a warm welcome to all listeners, and thank you very much for calling me on the show. So I would like to introduce Dr. Dhaval is a biodentist and oral surgeon. He is practicing since 15 years, and from all his 15 years of experience, today he is going to talk about oral health or about our children, how to take care of our children's oral health. So tell us more about biodentist and how can we take care of our children's oral health? See, children, especially when we're in childhood, we have two set of teeth. One is the milk teeth, and the nature has made it so nicely that we get a second chance with the permanent teeth. So if we have made some mistakes, if from the parent side or from the child side, there's always a second chance. So this is the uh, building years, the initial years where we have to really take care of the teeth. And basically, I have seen over many years that it is not only about the eating habits or the brushing or any other things, but it is the strength of the teeth, the mineral content, the way what type of food you're having, along with the, of course, the so-called junk these days. But again, a proper balanced diet and proper oral hygiene. It's an integrated approach. So, and of course, the health factors. There are many health factors जो affect करती हैं teeth के health को भी, because teeth is a part of our body. So now, biodentistry is not a specialized field. Biodentistry is about an approach where you can call it, it's known in America as holistic dentistry also, wherein इसके बहुत सारे different variants हैं, as though like it's an approach. So आप इसमें materials ले लो जिसमें which are very safe, which are used for the treatment. And of course, the medication is very less. So we try to use more of natural medicines, on which I'm still studying and I have been prescribing as well. So इसमें बहुत सारे natural medicines हैं, biochemics हैं, homeopathy है, and it is really working, and it is a complementary. It's not the solution. We have to do the treatment, but again, as we know, if in any infection we have to give antibiotics or painkillers. So if we can, avoid that to an extent and incorporate more of these things, so it is always beneficial, because बच्चे के जो growing stage में आप antibiotics हर 6 महीने या हर साल आप दोगे तो it is gonna decrease his immunity, the fighting ability of the body. And हमारे mouth में there are a lot of good bacteria as well as bad bacteria. So the good bacteria takes care of our digestion right till the gut. And if we're having regular antibiotics, it's killing the good bacteria. So you have digestion problems these days. So that's where I thought, soon after COVID, I got interested, and I've had a lot of antibiotics in my childhood. So I was thinking, no, as a child and for my child, I've not used antibiotics for any infection for that matter. So it's more justified that, for other children also, I should do something, and I'm studying more into it, and I've used it, and parents are really happy with this approach. Thank you, sir, ये हम लोगों को बताने के लिए. Sir, how can we prevent cavity in our children? Like हर एक parent worried है, बच्चे chocolates खाते हैं और cavity formation होता है, and it's very painful also. इसके बारे में can you please say something? There is no one method. It is again बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, मेहनत बहुत करना पड़ता है. ओरल हाइजीन है, फिर उसके बाद ब्रशिंग टेक्निक है, कितना टाइम आप खाने को दे रहे हो, मतलब द ड्यूरेशन ऑफ द फूड. जैसे कोई बच्चा अगर 15 मिनट में अपना खाना खत्म कर रहा है, so the mouth is less exposed to the sugar content, because every food we're eating, the digestion starts from the mouth. तो वो ब्रेक डाउन होता है शुगर्स में. एंड बेसिकली कैविटी क्या है,
the sugar content is lying on the teeth, and the bacteria is enjoying that food. It is eating on the sugar, it is releasing the acid, और वही acid जो है हमारे दांत में जो minerals हैं, calcium as well as phosphorus, it demineralizes. तो उसकी वजह से वो blackishness आ जाता है. It's an acid attack. So basically जितना खाने का exposure कम होगा, means जितना हम frequent meals कम करेंगे, और chewing, मतलब chewing भी बहुत जरूरी है, that how well you're chewing the food as well as the duration. Now, some children, they take more than half an hour to 45 minutes to finish the food. So the mouth is exposed with the food for a longer time. So bacteria gets more time to work on it. तो वही आप खाना जल्दी से आप खा लो उसको, मतलब जल्दी भी मतलब कि maybe 15 minutes or something, wherein आप उसको chew करना जरूरी है, जल्दी भी ऐसा नहीं कि just gulp it down, but हाँ उसको एक time duration में खाइए. Uske baad, you can rinse, or if you have fruits, which washes away the sugar content. So fruits also essential after your normal meal. It washes away the sugar content, and the more we keep it sugar free, the lesser the chances of cavity is there. And of course, brushing twice a day, and mouthwash. I don't, it's everyone's a choice, but I really feel more than the mouthwash, it is the brushing, the proper way of brushing. Even you have a lot of toothpaste nowadays. I'm not in favor of fluoride toothpaste, of course. So as a when we have a more natural approach, the fluoride के भी बहुत सारे theories आए हैं US से भी कि it affects the brain, it affects the development of the brain, and it could lead to hyperactivity or many other things. So it is not really proven, but yes, there are articles, and more or less now we have more of non-fluoridated toothpaste, and there are many natural ways where you can, instead of the fluoride toothpaste, you can have other natural options as well. So we have good food, proper brushing, timely rinsing your mouth after every meals, and that's the main mantra for preventing cavities. Okay, thank you so much for sharing that with us. And I want all the parents to note down this, that fluoride is not good for brain development, as Dr. Sood is saying. So tell us something, what are the habits we should ask our children to follow, like specific few habits? So sometimes it's very too hard. बहुत ज्यादा ही हो जाता है बच्चों को के साथ हम harsh हो जाते हैं. Do this, do that. Simple habits जो बच्चों को easy way में हम follow करवाना चाहिए, which is mandatory. What do you think? See, making children brush their teeth and all, it's a task. I mean, we also face that, with our children. But it's just that, we have to find ways out to explain to them that if you don't brush, or if you don't maintain your hygiene, why is it important to brush? Why is it important to take a bath every day? All these things. So we have to have a more gentle approach, make them understand, depending on the age, of course. Again, अब toddlers को मुश्किल हो, मतलब समझाना वैसे मुश्किल हो जाता है, but the preschoolers or the children above that age, so it makes more sense to sit with them. You have to take out little time. You have to teach them the proper brushing method, and another thing is we have to make them realize that if you're not cleaning, and when you have cavities, you'll have pain, and that's the reason why children don't express the initial part. जब initial cavities होती है, जब initial pain started, there is a phobia to go to the dentist because they're scared of the machines, they're scared of that injection. It's imbibed in them. By default they know that कि these things are gonna happen. So that phobia in children are there, and they tell it very late to the parents when it is out of control. So again, as parents, a parent का role ये है कि आप मॉनिटर कीजिए. आप ब्रश तो बच्चे को खुद करना चाहिए. Of course, many children don't do it, but again, seeing the teeth regularly every day, that cavity start हो रहा है, and you have to mend it at the early stage. Don't let it grow, क्योंकि cavities होगा. आप जितने भी brushing कर लीजिए, वो कर लीजिए, it is a normal. It's like second most commonest thing after cough and cold, as per the survey. Dental caries is the second most commonest disease happening.
तो होगा, बट देन अगेन अगर आप उसको टाइम टू टाइम डेंटिस्ट को 6 मंथ्स का रिव्यू दीजिए या साल में एक बार विजिट करिए, यू विल कम टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द माउथ। तो ये विजिट भी जरूरी है, और अपने होम रेमेडीज भी करना, जैसे होम रेमेडीज आई मीन टू से द प्रिवेंटिव पार्ट ऑफ कोर्स, एंड दैट इज द बेसिक थिंग। ओके। तो सर एक बहुत ही कॉमन सा मिथ है पेरेंट्स के बीच दैट ये जो मिल्क टूथ है वो तो गिर ही जाने वाला है, हट ही जाने वाला है, तो एक परमानेंट टीथ आएगा, देन वी विल टेक केयर ऑफ इट। हाउ ओरल हेल्थ इज रिलेटेड टू अदर डिजीजेस? क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर हमने शुरुआत से ही बच्चों के दांत का ख्याल नहीं रखा? तो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट दैट? See, teeth and bones have a very common structure in our body. Because since teeth is also part of the body, and teeth, if you have a weak set of teeth or the teeth which is prone to cavities, means your teeth are weak. It is not resisting that acid attack. So in a way, your bones will also be weak. So we have to understand from that point of view. Secondly, the gut. The gut health, the is very important, because we have this acid reflux. So if somebody has a lot of anxiety, or if they're not having proper digestion, so the acid reflux causes a lot of problems in the teeth. The acid of the teeth is the acid of the stomach. It comes up and it reacts with the calcium of the teeth. So it starts wearing off, the enamel wears off. फिर उसके बाद जो है जो कैविटी पकड़ना बहुत इजी हो जाता है. So it is very important that we have to take care of the entire general health. If your general health, your immunity is good, so you will have strong teeth. And of course, genetic also plays a part. अब कुछ पेरेंट्स में दोनों जो पेरेंट्स हैं उनके टीथ दे डोंट हैव हेल्दी टीथ, सो इट इज सीन इन चिल्ड्रन. इट मे नॉट बी, बट होता है जनरली. जेनेटिक्स आल्सो प्लेज अ पार्ट. बट अगेन द मिनरल्स जो है, विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन. सो द मिनरल कंटेंट ऑफ द टीथ, अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, अगर आप सही से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, supplements नहीं ले रहे हो, तो you will have weak set of teeth and you will have teeth problems. So that's a very big thing जो डॉक्टर धवल सूद ने कहा कि bones will get affected अगर हम अपने oral health का ख्याल नहीं रखते हैं. तो everything is related through our mouth and gut. So we can say, sir, कि everything is interrelated, right? Everything is interrelated. Yes, everything is interrelated. सर वन मोर क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क कि आजकल बच्चों के दांत बहुत ज्यादा ही टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो व्हाट आर द कॉजेस फॉर इट, एंड शुड बी सजेस्ट कि बचपन से ही ब्रेसेस लगा देने चाहिए बच्चों को, और एट व्हाट एज शुड बी गो फॉर द ब्रेसेस फॉर चिल्ड्रन? Braces, there are many factors. As I told you, one is a genetic factor. So if there is malalignment in one of the parents, तो commonly ये या तो गर्ल चाइल्ड या बॉय चाइल्ड में ये ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो माउथ का जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो एक सिमिलर हो जाता है. तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज अ स्केलेटल डिफॉर्मिटी, वन इज द टूथ डिफॉर्मिटी, जिसमें दांत आगे को होते हैं या क्राउडिंग होता है, मतलब आगे पीछे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड क्राउडिंग. तो क्राउडिंग कब होता है? जब आप जैसे अगर एक रूम में स्पेस कम है और ज्यादा लोगों को भर दिया है, तो वो डिस्क्रिपेंसी हो जाती है उसमें. सो इन अ सेम वे द टीथ आर गोना कम एट अ certain age, above, at the age of 6 years and above, the permanent teeth start coming. So now if the jaws are not in proper shape, means proper shape मतलब उसका जो साइज है वो छोटा है. वो छोटा है इसलिए क्योंकि ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे में, और ग्रोथ नहीं हो रही है एज पर द एज, तो वो जॉस छोटे हो गए, दांत तो वही साइज रहेगा. जो परमानेंट दांत आ रहा है दैट विल बी ऑफ द सेम साइज थ्रू आउट द लाइफ टाइम. तो इसलिए जो है, अगर वो दोनों सेम साइज के नहीं है तो उसको तो कहीं फिट होना है, तो वो आगे पीछे होते हैं, एक दूसरे को धक्का मार के वो अपना सेटल हो जाते हैं. और कुछ दांत कई बार निकलते भी नहीं है, तो उसमें क्या होता है, फिर आपको ब्रेसेस से क्या होता है, उसमें आर्च को एक्सपैंड करते हैं या दांत को आगे पीछे लेके जाते हैं ताकि स्पेस बने और
दांत जो है एक अलाइनमेंट में आए। अब उसके लिए भी ये है कि आपके ब्रेसेस आर यूजुअली 10 एंड अबव की एज में, अगर बहुत ज्यादा मैल अलाइनमेंट है तो 10 एंड अबव में वो होता है। बट अगर आप रेगुलर डेंटिस्ट के पास विजिट कर रहे हो तो यू कैन प्रिवेंट दैट if you are visiting regularly. And if the space is not there, the dentist will take out the teeth sequentially. We call it sequential extraction. तो वो sequentially extract करेंगे दांत को और आपको supplements देंगे, और उससे क्या आपका jaws भी बढ़ेगा। आपको ये पता चलेगा आप न्यूट्रिशन में कहाँ लैग कर रहे हो। Did you really need other supplements as well for the nutrition part? और फिर उसके बाद जो है दांत कुछ हद तक ठीक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड 6 to 8 years में रिमूवल ब्रेसेस आते हैं, रिटेनर्स आते हैं, प्रीफॉर्म्ड एक सिलिकॉन टाइप के वो आते हैं जो दांत को शेप में ले आते हैं। सो दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड rather than relying on the part that yeah, 10 and above is the correct age to do the fixed treatment, and before that many corrective measures can be done. But I recommend कि from the age of 4-5 से ही आप regular visit कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हाँ उसका ग्रोथ कैसे चल रही, परमानेंट दांत कैसे आएंगे, वो आप लगभग आइडिया लगा सकते हो। तो रेगुलर विजिट करने से क्या, यू कैन प्रिवेंट लॉट ऑफ थिंग्स। तो पेरेंट्स, आई होप आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर सूद ने क्या कहा। रेगुलर विजिट टू डेंटिस्ट इज मस्ट फॉर अस एंड फॉर आवर चिल्ड्रन। ओके, सो डॉक्टर सूद, कैन यू प्लीज टेल अस फ्यू ब्रशिंग टेक्निक्स फॉर आवर पेरेंट्स? Brushing technique very important, and the choice of brush is very important. And today we have a lot of options. Different companies are manufacturing different type of brushes, so we have to make sure we have to touch with our hands whether the brush is really soft. It's very important having a soft brush, because right from the age of 6 years we have permanent teeth coming out, and if you're using any brush other than soft, it is going to affect the enamel of the teeth. So बाद में जाके आपको sensitivity issues आएंगे। Secondly, आपका जो brushing का तरीका होना चाहिए, it has to be rotatory. Like supposing this is your front teeth, it has to be rotatory, like this, like this. On the sides also we have to go rotation. जो दांत का जो टॉप सरफेस है उसमें हमें ऐसे जाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें कोई भी आप बोल लीजिए। बट स्पेशली जो सरफेस जो दिख रहा है जो बाहर की तरफ है, इट हैज टू बी रोटेटरी। तो ऐसे करेंगे तो आपके गम्स भी रिसीड कर जाएंगे, गम्स में भी, क्योंकि गम्स आर वेरी सॉफ्ट नियर द टीथ, तो वो भी प्रॉब्लम देगा। और ऐसे रोटेशन में हम कम फोर्स लगा रहे हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक ब्रश, इट इज वेरी कन्वीनियंट कि आपको बस टच करना है और वो अपने आप वो हो रहा है। बट उसमें जो फोर्स लग रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा फोर्स भी लगा रहे हो, अगर बच्चा खुद कर रहा है, ही विल नॉट नो हाउ जेंटल यू हैव टू बी, सो ही विल बी अप्लाइंग मोर फोर्स, तो आपका इनेमल ज्यादा घिसेगा उसमें, ऑल्दो इट इज वेरी कन्वीनियंट। But I cannot say that this is good or not, but you have to make sure that you have to be really gentle and the bristles have to be really soft. And it has to be a slow process. ये नहीं कि आप उसको एकदम फटाफट करो कि और जोर से करूंगा तो दांत बहुत चमक जाएंगे, nothing's gonna happen. So basically what we have studied also, actually toothpaste don't play a wide role actually, but why we are using toothpaste is for the freshness, and certain ingredients which are antibacterial. But otherwise in cleaning, toothpaste is more like just a feel. वैसे नॉर्मल ब्रश से पहले जैसे बहुत सारे चीज, पहले कुछ लोग नमक भी यूज करते थे या वो भी होता था, that's also antibacterial, but it brings a freshness. So actually it is more the technique rather than the toothpaste. And what I have studied, I mean, I'm talking about these there is this category of medicine which I'm using, biochemic tablets. So it is basically a energy medicine. उसमें वो एक particular ingredient, जैसे कैल्शियम के बहुत सारे variants है, उसकी energy होती है which gets absorbed directly in the body. So it doesn't need to go through जो process of कि जैसे अब कैल्शियम है, कैल्शियम को विटामिन डी होगा तभी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन होगा। तो इसमें क्या है कि इसमें और टू मच ऑफ सप्लीमेंट्स अगेन इज नॉट वेरी गुड। So what these are very gentle medicines and it works very well,
and it works in the teeth coming out in proper time, in proper shape, and having good mineral content, which can resist bacterial decay. So anyone can find that out, and if anyone else needs any help, I can guide them also. But most important thing is that as parents, most of the parents आज देख रहे हो कि time नहीं होता है. So, but these early years are very important. It's like an investment. Now, basically, parents को ये समझना जरूरी होगा कि हमें time देना है बच्चों को. Time investment is more important than the money investment, because जब दांत खराब होते हैं, I mean, people, I'm sure people know the cost of braces and everything. So अगर आप शुरू से प्रिवेंटिव मेजर्स लोगे, टाइम दोगे, बच्चों के दांत रेगुलर चेकअप कराओगे, खुद देखोगे, उनको ब्रशिंग प्रॉपर्ली सिखाओगे, तो इट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. आप बहुत पैसे सेव कर पाओगे आगे के लिए. और ऑफ कोर्स जितने नेचुरल टीथ हैं, आज बहुत सारे ऑप्शंस है रिप्लेसमेंट के बाद में जाके, एज यू नो व्हेन दे बिकम एडल्ट्स, बट natural is still natural. How much ever the techniques come, there is no replacement for a natural tooth. So from my suggestion to all the parents is we have to take out time for ourselves, for our children, and because these initial years are very important. I'm not talking about only teeth, everything. Their the time we give, our love, our care, our whatever time we give for their requirement, their play के उसमें, everything is essential. It's a building block उनके फ्यूचर के लिए. एंड ऑफ कोर्स जनरल हेल्थ का जो बताया मैंने, हाउ इट्स नॉट ओनली ओरल हेल्थ, इट इज द एंटायर. सो वी हैव टू हैव अ होलिस्टिक अप्रोच. सो the oral condition tells a lot about the general health as well, so we need to take care of both equally. थैंक यू डॉक्टर सूद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमारे पेरेंट्स के लिए इतना कुछ नॉलेज दिया. फॉर ऑल द पेरेंट्स, अगर आपको डॉक्टर सूद से कनेक्ट करना है और उनके बारे में कुछ भी जानना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डॉक्टर सूद के सारे इंफॉर्मेशन डालने वाली हूँ. So go and connect with him. कोई सवाल है, if there is anything you want to ask about your child and yourself also, Dr. Sood is more than willing to help you. And do reach out to dentist. Take care of your child oral health, because it's about holistic development. And as Dr. Sood said, your oral health shows a lot, tells a lot about your overall health. Okay. Thank you, Dr. Sood, for being here with us today. Thank you so much. I hope in future we will do some more interviews with you, because I have a lot of questions to ask regarding oral health for our children. So we will come again with some more interviews with Dr. Dhaval Sood. Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you.